Hello, hello. Am I audible? হ্যাঁ দাদা হ্যাঁ audible। দাদা। আচ্ছা ঠিক আছে। তো আরো ১ মিনিট দাঁড়িয়ে যাই কেউ যদি এখনো আসে। So now I am sharing my screen. Please let me know if you face any problem. So let's start. Our today's topic is basic principles of cell injury and adaptation. तो हमारा आज का टॉपिक है basic principles of cell injury and adaptation. So this is a part of pathophysiology, and you all know that pathophysiology is very important in terms of different MCQs क्योंकि ये बेसिक टॉपिक नहीं है जो आप सभी को मतलब बार-बार पढ़ना होगा, तो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ से बता के चलूँगा जो आपको दिमाग में रखना है। Now let us first begin with the term cell injury. Cell injury basically means if any cell succumbs to any kind of injury, मतलब सेल का जो इंजुरी होता है, it can be mechanical, chemical, due to ionization, and due to some physiological changes. So here we are defining the injury to the cells of our body and how it responds to the injury. मतलब अगर कोई इंजरी होता है सेल्स को, तो क्या रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा, उनका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, ये हम हमारी स्लाइड्स में देखेंगे. And the next thing we will be discussing is about adaptation. Adaptation means how it is adapting to its circumstances. मतलब अगर कुछ इंजरी होता है और अगर सेल के साथ कुछ भी हो, तो ये कैसे अडेप्ट करेगा, इसका प्रोसीजर क्या होगा, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे. So now let's go with the preliminary mechanisms of our body. So this is homeostasis. Homeostasis basically means the normal state of our body, not only our body, of any system like GI tract, respiratory system, anything at its normal state. होम्योस्टैटिस का मतलब होता है कि कुछ आ, जो भी सिस्टम हो वो अपनी नॉर्मल लेवल पे है, मतलब ज्यादा भी नहीं, हाइपर भी नहीं और हाइपो भी नहीं. तो यहाँ पर हम होम्योस्टैसिस का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जहाँ पर ये है हमारा कंट्रोल सेंटर. So can anyone tell me that what is the thermal regulatory center in our body? Hypothalamus. Correct. Hypothalamus. Correct. So this is the control center of our body. Think there is hypothalamus, small gland, and it is receiving some stimuli from the effector. Let us consider this image of skin as
and effector as an effector. It means that our skin is responding to sorry I was incorrect. Our skin is responding to the previous stimuli. It is an effector, means our skin is acting like an effector, which means that it is responding to a stimuli. So let us understand from, yeah, from the stimuli itself. Now think that the temperature outside is very hot. It is very hot outside, and your body is trying to make up the heat, compensate the body temperature and to restore it to normal level. जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होगा, या कि जो होता है 35.8 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है, वो ये बना के रखना चाहता है। तो इसको रखने के लिए क्या होगा कि जब भी हमें गर्मी लगेगा, उसके बाद हाइपोथैलेमस इफेक्ट करके द्वारा हमारी स्किन और एपिडर्मल सेल्स को बोलेगा कि वो वाटर को इवापोरेट करे, वो वाटर को रिलीज करे, जिससे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर गिर जाए। And whenever our body temperature comes down to the normal level, it will be okay for the body and hypothalamus, because it is restoring to homeostasis like we discussed earlier. And let us think that it is becoming excessive, मतलब ये ज्यादा हो गया, और वेदर भी कुछ ऐसा हो गया कि हमारी बॉडी को कंपनसेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। मतलब बाहर ठंडी है, मतलब अचानक मौसम बदल गया और ठंडी पड़ गया। तो ये एक स्टिमुलस की तरह काम करेगा। कैसा स्टिमुलस? कि इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, आवर बॉडी वुड फील कोल्ड, bitter cold, and then similarly to the previous one, it will induce some effectors and cause shivering, means our muscles would tremble. So whenever our muscles would tremble, it would generate some kind of mechanical tremors, or it would generate heat. That is how we would maintain the homeostasis again, because we are raising our body temperature. Now there is another example including blood vessels. Okay, so there are many kind of thermoregulators inside our body. There are a kind of thermoregulators. So whenever they sense any change in the temperature outside, they would try to maintain it from inside the body. So from the view of blood vessels, if the temperature outside is cold, it would cause the dilation of blood vessels. So dilation means the temperature would be coming towards the skin, means it is becoming exterior to our skin to release heat, which would heat up our skin. But on the opposite side, when the thermoregulators are feeling that it is hot outside, it would tell the receptors to constrict the blood vessels and put them inside, so that the heat is not observed by the skin. Sorry. So have you read all these things that I have been telling?
and see this slide very carefully. I am actually giving you time for seeing the slide. That is why I am giving you 30 to 40 seconds to see the slide. If you have any kind of query, please let me answer. দাদা হ্যাঁ, বলো। দাদা বলছি তুমি ওই যে ডাইলেশনের পর একটা হিট রিলিজের কি একটা ব্যাপার বলবে না, ওই জায়গাটা বুঝতে পারলাম না, একবার একটু রিপিট করো। ব্যাপারটা বলতে, so our blood basically retains a normal temperature. अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। हमारा जो ब्लड होता है उसका टेम्परेचर एकदम स्टैंडर्ड रहता है हमेशा। तो जब ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे तो वो एपिडर्मल लेयर की तरफ बढ़ेंगे। मतलब ये जो डायलेट हुआ नॉर्मल ब्लड वेसल्स से ये वेसल्स डायलेट हुआ, तो ये क्या हुआ, इसका सरफेस एरिया थोड़ा इंक्रीज हुआ टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए। इससे क्या होगा, इसका जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी इंक्रीज करेगा। मेरे पास इससे ज़्यादा प्रूफ नहीं है बताने के लिए, मैं भी बुक से पढ़ा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ही होता है। कि जब भी आप देखो कि whenever you see in cold areas that people shiver and their face becomes red. Why? Because their blood vessels have dilated. That is how their faces have become red, their hands have become red, totally reddish. Okay, this is the way I was trying to telling you. Understood? হ্যাঁ দাদা বুঝতে পারলাম। তো আমার কাছে বেশি প্রমাণ নেই এটাকে বোঝানোর জন্য। আমি বইতে পড়েছিলাম, এটা আমি আলোচনা করলাম এর মধ্যে। Okay, so let us move towards our next slide, which is about feedback mechanism. So here we are trying to discuss. Okay, let us understand the feedback mechanism. So in the maintenance of homeostasis, our body goes through our body goes through a number of loops. Understood? And these have been segregated into the positive feedback loop and the negative feedback loop. So from the name itself, you can understand that these feedback loops are about the effects. Means कि अगर समझ लो पहले वाला जो एग्जाम्पल है, हमारी बॉडी को होम्योस्टैसिस चाहिए किसी भी तरह से। तो होम्योस्टैसिस के लिए ये फॉलो करते हैं टू वेज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब हमारे शरीर में कुछ लगेगा, मतलब समझ लो कि थायरॉक्सिन कम हो रहा है हमारी बॉडी में, तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, टीएसएच रिलीज कर देगा, जो जाएगा थायराइड ग्लैंड में और थायरॉक्सिन रिलीज होगा। ये हो गया हमारा पॉजिटिव फीडबैक लूप। ओके, इट इज पॉजिटिव फीडबैक लूप बिकॉज इट इज ए पॉजिटिव वे, यू थिंक इट इज इंड्यूसिंग द रिलीज, थायरॉक्सिन रिलीज होगा। और नेगेटिव फीडबैक लूप क्या है कि किसी का मेटाबॉलिज्म एक्सेसिवली बढ़ गया, मेटाबॉलिज्म इतना बढ़ गया कि उसका वेट गेन ही नहीं हो रहा, मतलब थायरोटॉक्सिकोसिस जैसा कुछ हो गया, टॉक्सिसिटी हो गया थायरॉक्सिन हार्मोन का। तो नेगेटिव फीडबैक लूप would suggest to stop the release of thyroxine and TSH inclusively, and that is how our body would restore its normalcy. So this is all about the feedback loops. Understood? Now let us understand this positive feedback loop. So this is a positive feedback loop. Means our body is trying to induce the levels of some biochemicals to
exert an effect. So here we are giving an example of labor. Labor means the delivery of a child, delivery of a newborn from the fetus, from the womb. So understand it. So in this positive feedback system, the baby is inside the uterus. Okay, and here is the cervix part. You can see from where the baby would be delivered. In a normal delivery, the baby would be delivered through the cervical route. Now, as you all know that oxytocin is amplifying the uterine contraction. Now, any of you tell me that from which part of the pituitary gland is oxytocin released? Posterior. Posterior gland means neurohypophysis. So from the posterior gland, the oxytocin hormone is releasing, and it is it is doing what? ये यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा. मतलब हमारा जो यूटेरस होगा, ये जो एक फीमेल यूटेरस हो गया लेबर के दौरान, तो यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा. यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होगा जैसे लेबर स्मूथ हो, बेबी अच्छे से बाहर निकल पाए. तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो बेबी कब अच्छे से बाहर निकलेगा? जब उसके पैर सर्विक्स की तरफ होंगे या हेड? हेड सर्विक्स की तरफ होंगे तभी वो अच्छे से डिलीवरी होगा. जैसे हम फिल्म्स में या वीडियोस में देखते हैं. तो जैसे सर्विक्स ब्रेन को सिग्नल पहुंचाएगा कि अभी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, बेबी कुछ ही तरफ आए, मतलब सर्विक्स की तरफ आ रहा है, तब ब्रेन क्या करेगा? और भी स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को टू सीक्रेट ऑक्सीटोसिन मोर एंड मोर, क्योंकि हमें बेबी ऐसी पोजीशन में चाहिए जहां पर उसका हेड सर्विक्स की तरफ हो. ओके, सॉरी. तो बेबी कहाँ पर चाहिए? जहां पर उसका हेड सर्विक्स की तरफ हो. मान लो एक बेबी है, उसका हेड सर्विक्स की तरफ जब हो जाए, तो ब्रेन के ये कैस्केडिंग सिग्नल्स के दौरान जब बेबी मतलब सर्विक्स की तरफ आ जाए, तब कॉन्ट्रैक्शंस बंद हो जाएंगे और उसके बाद जैसे डिलीवरी होगा, डिलीवरी. तो ये रहा एक पॉजिटिव फीडबैक लूप का एग्जाम्पल. और भी काफी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप की, मतलब जिससे कि हमारे बॉडी के इफेक्ट मिले. मतलब जब समझ लो कि हमारे बॉडी में ईस्ट्रोजेन की कमी हो जाए, तो पॉजिटिव फीडबैक लूप would do what? It would induce the release of follicle stimulating hormone. So this follicle stimulating hormone would successively increase the levels of the estrogen hormone. And this is another example of positive feedback loop. Hope you all have understood about this. If any question from this slide, let me know. Okay, now we can move to the next slide, which is about negative feedback loop. So this was which I was talking about, that the changes in the hormone in our blood. As you all know that negative feedback means to inhibit the release of certain chemicals to aid the restoration of normalcy. मतलब बॉडी को हमें एक नॉर्मल स्टेट में चाहिए, उसके लिए अगर हमें कुछ इनहिबिट करना पड़े तो हम करेंगे. मान लो कि हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज हो रहा है, मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. तो ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी में जाएगा. फिर पिट्यूटरीज एडेनोहाइपोफाइसिस मतलब जो एंटीरियर ग्लैंड है उससे रिलीज होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड along with it would release follicle stimulating hormone.
और उसके बाद जब ये दो हार्मोन्स इफेक्ट करेंगे जेनिटेलिया पर मतलब ओवरी पे, तो उसके बाद हमें दिखेगा कि रिलीज हो रहा है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जिसके इफेक्ट पड़ेगा यूटेरस में, कि यूटेरस में ईस्ट्रोजन करेगा जो यूटेरस का राइपनिंग होगा डिलीवरी के लिए, मतलब यूटेरस का जो सेल्स होंगे सर्विक्स के मतलब जो इंटरनल लेयर होगा सर्विक्स के अंदर, उसका लेयर थिक हो जाएगा, इसे कहते हैं यूटेराइन राइपनिंग। तो ये राइपनिंग करवाएगा प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन करवाएगा लेबरिंग सॉरी प्रेग्नेंट लेडी को जो जो चीज़ चाहिए उसके लिए हेल्प करेगा। तो अगर ये सब प्रेगनेंसी में है तो तब ये होम्योस्टेसिस है, समझ लो। जब प्रेगनेंसी में ये सारा सिस्टम काम कर रहा है तो ये होम्योस्टेसिस है प्रेगनेंसी में। पर अगर लेबर हो जाए मतलब पोस्टपार्टम स्टेज में, मतलब पोस्ट लेबर फेज में, ये तो तब होम्योस्टेसिस नहीं रहेगा, क्योंकि तब एक फीमेल में ये सब हार्मोन्स नॉर्मल लेवल में चाहिए। तो तब क्या होगा, तब जब हमारे ब्लड में जो केमो रेगुलेटर्स होंगे वो इन हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा पाएंगे, तो ये न्यूरल सिग्नल्स के द्वारा हाइपोथैलेमस को बोलेंगे जीएनआरएच रिलीज को बंद कर दे। और अगर जीएनआरएच रिलीज बंद हो गया तो पिट्यूटरी रिलीज भी बंद हो जाएगा, और एलएच और एफएसएच रिलीज नहीं होंगे जब तक हमें नहीं चाहिए। उसके बाद अगर सेकेंड कंसेप्शन आए और दूसरी बार प्रेगनेंसी आए तो फिर ये दूसरी होम्योस्टेसिस में चला जाएगा, कि ओवरी को हमें मैच्योर करना है, हमें यूटेराइन राइपनिंग करना है, ये सब। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेगेटिव फीडबैक लूप, कि होम्योस्टेसिस बॉडी में कब हमें चाहिए, प्रेगनेंसी में कैसा होम्योस्टेसिस होगा और प्रेगनेंसी के बाद कैसा होम्योस्टेसिस होगा। ओके, इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क मी। দাদা এটা বুঝতে পারলাম না, আরেকবার একটু বলো পোস্ট প্রেগনেন্সিতে কি হয়? পোস্ট প্রেগনেন্সিতে ব্যাপারটা হচ্ছে तो मान लो प्रेगनेंसी खत्म हो गया, तो प्रेगनेंसी अगर खत्म हो गया तो हमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा लेवल में नहीं चाहिए। वी डू नॉट नीड देम इन एक्सेस लेवल्स बिकॉज वी हैव यूज्ड देम अप। आई एम सॉरी। So as we have used up enough estrogen and progesterone, and we have already passed the pregnancy phase, we have delivered the delivered the baby. So now we are willing that the estrogen and progesterone levels would come down to normal levels, जैसे नॉर्मल फीमेल्स में होता है, जैसे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स होना चाहिए। तो उसको करने के लिए क्या होगा, जो केमो रेगुलेटर्स है, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, our body understand any chemical or mechanical change through certain type of receptors. Let me tell you, for any kind of mechanical change like pressure in the blood, we have baroreceptors. Okay, and for any kind of chemical change, we have chemoreceptors accordingly. So now, when these chemoreceptors understand that the hormones are excessive in our blood, it would direct our brain to सीज द रिलीज ऑफ देम, कि और ज्यादा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज मत करो। अंडरस्टूड? হ্যাঁ দাদা। ओके, सो वी always need certain levels of hormones at certain periods. Okay, now let us move towards the rupture of homeostasis, means जब होम्योस्टेसिस बिगड़ जाए, जब सेल इंजुरी की तरफ हम जाए, तो वो देख लेते हैं। सी, we are seeing that a normal cell is in
होम्योस्टैसिस मीन्स ये स्टेडी स्टेट में है, सेल का मोटा मेटाबॉलिज्म अच्छा है, सेल का जो रेप्लिकेशन है, डिवीजन है, वो सब अच्छा है, सेल में कोई गड़बड़ी नहीं है। और अगर किसी भी कारण उसमें इंजुरी आ जाए, एंड नाउ वी आर classifying this injury into two types, be it reversible and irreversible kinds. तो पहले हम सोच ले कि अगर किसी भी सेल में सेल इंजुरी हो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दैट a cell is suffering from some injury. If the injury is mild, if the injury is mild, it is reversible kind, means जब वो प्रेशर या वो केमिकल चेंज हट जाए तो सेल अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौट जाएगा। और अगर ये इंजुरी सीवियर है, कि इंजुरी प्रोलॉन्ग्ड है, और प्रोलॉन्ग्ड के ज्यादा भी इतना सीवियर है कि कोई रिवर्सिबल चेंज पॉसिबल ही नहीं, तो उसके बाद क्या होगा, वो बन जाएगा इरिवर्सिबल इंजुरी। और इरिवर्सिबल इंजुरी दो तरह की हो सकती है, जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। एक होती है नेक्रोसिस और एक होती है एपोप्टोसिस। एंड यू ऑल नो एपोप्टोसिस विच इज द प्रोग्राम सेल डेथ, and necrosis, which means that it is mass cell destructions, mean the cell is getting killed by irreversible causes. Understood? Now just run through the causes of cell injury. There is a normal cell in the first place. एक नेचुरल सेल है, जैसे सोच लेते हैं कि हमारा एपिडर्मल सेल, एक एपिडर्मल सेल है हमारे जो हाथ के ऊपर स्किन लेयर होती है, वहां पर एक एपिडर्मल सेल है। तो इस एपिडर्मल सेल में कुछ इंजुरियस स्टिमुलीज नजर आई, मतलब ज्यादा टेम्परेचर में हम एक्सपोज हो गए बहुत ज्यादा देर के दौरान, मतलब कुछ गर्म चीज हमारे स्किन में बहुत देर तक टच करके रहा, मतलब बर्न की जैसा सिचुएशन आ गया है। और कुछ स्ट्रेस आ गया उसके दौरान, कि इंजुरियस स्टिमुलस आ जाए, इंक्रीज टेम्परेचर और स्ट्रेस मीन विच इज मीनिंग टू बर्न्स। तो उसके बाद क्या हो सकता है कि अगर इंजुरी स्टिमुली हो तो वो सेल इंजरी कहलाता है। जो अगर रिवर्सिबल हो, कि कुछ गर्म आपके हाथ लगा और आपने कुछ देर बाद हाथ हटा लिया, तो वो रिवर्सिबल है, कि वहां पर सम जो होते हैं एप्सिस होंगे, सॉरी नो एप्सिस, वहां पर सम स्वेलिंग होगी सेल्स का, स्वेलिंग मतलब स्किन फूल जाएगा, फोशका पड़বে। So after which you will gain normal skins after a week or later. But if you imagine if the cell injury is severe, means it is irreversible, then it would succumb to either necrosis or apoptosis. But if the stimuli is not confined to stimuli, it is turning into stress, मतलब आप ज्यादा टेम्परेचर में काफी समय तक हो, जो कि स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस मतलब बर्न, बर्न की तरह हो जाए, वो स्किन के लिए स्ट्रेस होगा। तो अगर ऐसा हो तो सेल्स क्या करेंगे, अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे। एक वो हाइपरट्रॉपी कर सकते हैं, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा कि ये टर्मिनोलॉजी कैसे होंगे, कि हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या है, हाइपरप्लेशिया का मतलब क्या है। सो सेल्स वुड अडेप्ट टू इट, and this is the basic mechanisms that how do cells adapt to certain kinds of injury or stimuli or stress. Understood? See this diagram very carefully,
and this is the periodicity that normal cell is suffering from either stimulus or stress. If the stimulus is not severe, it is reversible. If severe, irreversible. And if this is not a stimulus or leading to stress, it would lead to certain adaptations. That is it. और अगर यहाँ पर एक पॉइंट है कि adaptive responses exceeded or significant damaging in cells, मतलब अगर सेल अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है पर अडेप्ट नहीं कर पाए तो वो इंजुरी की तरफ बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल इंजुरी. ओके, now we should discuss about the two kinds of cell injury, irreversible cell injury. Think, I'm showing this to you. This is a normal human cell. ये एक साधारण सेल है. और जैसे हमने सुना कि अगर इंजुरी सीवियर हो तो क्या हो सकता है, एक हो सकता है नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस. नेक्रोसिस मतलब मास सेल डेथ, मतलब इट इज नॉट programmed, it is happening due to severity of the incidents. But apoptosis means it is programmed cell death, which is programmed by the cell's genetic element. मीन्स एपोप्टोसिस का मतलब समझ सकते हैं कि जैसे आरबीसी का डेथ होता है 120 डेज में, एचबीसी का डेथ होता है 21 डेज में, प्लेटलेट का डेथ होता है 8 to 10 डेज में. ऐसे कि किसी भी सेल का एक प्रोग्राम टाइम होता है सरवाइव करने का, उसके बाद वो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन के द्वारा मर जाता है. बट इफ नेक्रोसिस हैपेंस मीन्स the cell is not dying through programmed death, it causes what? It causes swelling. मतलब क्या होगा? Now let me tell you some things that how does swelling happen? There are 3 to 4 major concerns that we need to look at whenever we are talking about the necrosis. So the primary thing is necrosis can happen due to cell membrane rupture. सेल मेम्ब्रेन रप्चर से क्या होगा? हमारा सेल मेम्ब्रेन में एक एटीपीएस डिपेंडेंट चैनल होता है जो क्या करता है, जो जो इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रासेल्यूलर एनवायरनमेंट में आयन्स होने चाहिए उसको रेगुलेट करता है. जैसे हमारे सेल के इंट्रासेल्यूलर एनवायरनमेंट में पोटेशियम आयन रहना चाहिए और एक्स्ट्रासेल्यूलर एनवायरनमेंट में सोडियम आयन रहना चाहिए. तो जब सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए या सेल मेम्ब्रेन में ऑल्टरेशन आ जाए, देयर इज अ टर्म ऑल्टरेशन आ जाए, तो क्या होगा? तो वो चैनल बिगड़ जाएगा. उसके दौरान क्या हो सकता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम है वो सेल के अंदर आ जाएगा. और हम जानते हैं कि इन आवर ह्यूमन बॉडी वाटर फॉलोज द सोडियम आयन. ओके, wherever the sodium ion would go, water would follow it. मतलब अगर सोडियम सेल के अंदर जाए तो वाटर भी सेल के अंदर जाएगा और सेल का एक्सेसिव स्वेलिंग होगा. और एक बात हो सकती है स्वेलिंग का कि आ, आप समझ ले कुछ एंजाइम्स है, जो एंजाइम्स अगर लीक हो जाए, मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा कि कुछ एंजाइम्स है, जो एंजाइम्स अगर लीक हो जाए तो वो क्या कर सकते हैं, वो आपकी सेल में स्वेलिंग घटा सकते हैं. जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से some enzymes from the
endoplasmic reticulum, if released, can cause severe swelling, can cause severe swelling. And another organelle, which is mitochondria, it is also responsible for the swelling of the cell, because mitochondria also holds some important biochemicals, including, remember the name, that the release of this biochemical, which is cytochrome C, which is responsible for apoptosis, is getting released in the times of excessive injury, which is causing the necrosis. And now we are talking about apoptosis. Apoptosis is a programmed cell death. So it is basically the shrinkage of cells and the formation of blebs. These are known as blebs, BLEBS. Blebs means the circular outgrowths outside of the cell. And following these two parts, we are seeing that the cell content is leaking from the cell. The cell membrane has erased completely, and the leakage of cell content is happening. Means the proteins are getting released, all the enzymes are getting released. But in case of apoptosis, it is not happening. But as you imagine, that necrosis can cause necrosis to adjacent cells. If you imagine that there are some cells adjacently, मतलब एक के बाद एक सेल्स है, उसके बीच में इंटरस्टिशियल गैप्स होंगे, तो इन सेल्स में अगर इस सेल में रप्चर हो जाए तो क्या होगा, जो डिग्रेडिंग एंजाइम्स है वो लीक हो गए, और दूसरे चांसेस है कि वो दूसरे सेल में जाकर ऑल्टरेशन घटा सकते हैं, जिससे क्या होगा, ये सेल भी रप्चर हो जाएगा, सक्सेसिवली ये सेल, उसके बाद ये सेल। तो हम क्या देख सकते हैं, ये प्रोलिफरेशन ऑफ नेगेटिव डैमेजेस, कि अगर एक सेल डैमेज हो जाए तो ये सीरियली दूसरे सेल्स को भी अफेक्ट करते हैं। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एपोप्टोसिस में क्या होता है। एपोप्टोसिस में ये ब्रेक होते हैं एपोप्टिक बॉडीज में, जो कि खुद एंजाइम्स के द्वारा ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब कोई एडजेसेंट सेल्स में कोई डैमेज नहीं करते, कोई हानि नहीं पहुंचाते, प्योरली प्रोग्राम्ड सेल डेथ। गॉट इट? एंड adjacent to it, you are seeing that how the necrosis and apoptosis is happening to a certain cell. Okay, see it. And yes, another thing I was forgetting to tell you, that these apoptic bodies can cause no harm because our immunity system gets alert immediately after the generation of apoptic bodies. So what it does, ये phagocytes को रिलीज करते हैं, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम फैगोसाइट्स को रिलीज करते हैं, जो कि इस एपोप्टिक बॉडीज को डाइजेस्ट कर लेते हैं और ये गायब हो जाते हैं। उसके बाद ये गायब हो जाते हैं, मतलब एपोप्टोसिस के बाद ये सेल पूरी तरह बॉडी से रिमूव हो गया। Now see this, that how is necrosis and apoptosis is happening. Okay. तो अब हम चलते हैं दूसरे स्लाइड में, जो कि और भी करीब से दिखाते हैं कि
कैसे एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस डिफरेंट है, कि सेल स्वेलिंग कैसे होता है, एपोप्टिक बॉडीज कैसे दिखते हैं, ठीक है। और नेक्रोसिस का एक और बुरा चीज है कि जब हमारा प्रोटीन्स रप्चर होके बाहर निकल जाए, समझ लो ये प्रोटीन्स है, ये अगर सेल्स के अंदर से बाहर निकल जाए तो ये हमारे बॉडीज के लिए एक फॉरेन एलिमेंट की तरह काम करते हैं और हमारी बॉडी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शो करती है उन प्रोटीन्स के अगेंस्ट, जिससे हम देख सकते हैं कि जहाँ पर स्वेलिंग हुआ, मतलब इंजुरी के बाद जहाँ पर नेक्रोसिस हुआ, डिस्कलरेशन आया, उसके इर्द गिर्द ही हमें इरिटेशन, रैशेस, ये सब देखने मिलते हैं, क्योंकि उस एरिया में जो प्रोटीन्स रिलीज हुआ उसकी वजह से जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हुए वो हमारी बॉडी में वो सब इफेक्ट्स शो करते हैं। पर एपोप्टोसिस में ये सब नहीं होता, एपोप्टिक बॉडीज फैगोसाइटोस के द्वारा डाइजेस्ट हो जाती है और मामला खत्म, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द डिफरेंस between apoptosis and necrosis. So apoptosis is basically a physiological, sometimes pathological. It is sometimes, but most of the times it is physiological, because body is programming these cells to die at certain times, means after certain interval. But necrosis is always pathological and accidental. It always happens after injury. Always keep in mind that necrosis always happens after injury. And the next point we should discuss about is, it is active process, means it is happening from the genetic makeup of the cells, that this cell has to die after these many days, this cell has to die after 120 days, etc., etc. And it is basically energy dependent. But necrosis is passive, it never requires energy, and it always happens after excessive injury. And in terms of DNA, let us understand, in terms of DNA, we can see that it follows specific degradation ladder. Remember it. It follows specific degradation ladder. And you should not elaborate it too much, that what is degradation ladder and how does it work. Just keep in mind that apoptosis shows degradation ladder ranging from 180 to 200 base pair. Base pair basically means the uh, whirling in the DNA, like this. How many swirls are there in the DNA? These are known as base pair. It can range from 180 base pair to 1000 base pair on 1 kilo base pair. But necrosis follows random degradation, no ladder or serialness. Okay. Now, if we come to inflammation, apoptosis never show any kind of inflammation, but necrosis does. And apoptosis is, as you all know, is regulated by genes, but necrosis is not. And now let us come to a very important point, that what are the other things that we should know about the difference. Okay, let me write here that there are some other differences regarding this apoptosis and necrosis. That in apoptosis, I was telling about ladder. The ladder pattern is seen in electrophoresis. You might have heard about electrophoresis, which is basically meaning that the charge bearing component would move to certain charge, like be it positive or negative, means movement according to the charge is electrophoresis. So ladder pattern in electrophoresis is the symbol of apoptosis. Okay, ladder pattern is the symbol of apoptosis. But
If we come to necrosis, it shows smear pattern. It shows smear pattern. Okay, sorry. Let us write here. It is apoptosis and it is necrosis. Okay, so this one shows ladder pattern in electrophoresis and this one smear pattern. And in the next example, there is that in apoptosis, you know that the cell size is decreased because it is shrinking, and in necrosis, it is swelling. And yes, the secondary thing we should know about is necrosis is sometimes related to coagulation. Means coagulation happens. Like coagulation means the formation of clots in the blood, like the adhesion of platelets and the solidification inside the blood vessels. These ones, coagulation and the destruction of organelles. These are the secondary points you should keep in mind, that the destruction of cell organelles happen. That is why the cell organelles consisting harmful enzymes, including endoplasmic reticulum and lysozymes, can cause a degradative damages to the adjacent cells. But in apoptosis, nothing happens. We can see chromatin condensation along with the shrinkage of the shells and the phagocytosis. দাদা তুমি কি এটা উল্টো লিখলে? উল্টো লিখলাম বলতে? মানে বললে অ্যাপোপ্টোসিস ক্রোমাটিন কনডেনসেশন। ও আচ্ছা, এটা ও আমি ভুল লিখে ফেলেছি। ও থ্যাংক ইউ ফর রিমাইন্ডিং। আহ ভুল লিখে যাচ্ছিলাম। In apoptosis, we can see chromatin condensation, the shrinkage of the cells. Sorry, thank you for reminding me. But in necrosis, we are seeing coagulation. That is why whenever necrosis happens, that area suffers from ischemia. Ischemia means the deprivation of oxygenated blood. If coagulation happens in a blood vessel, it would not receive sufficient blood from the heart. That would result in deprivation of the cells with oxygen. मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी वहां पर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि नेक्रोसिस जो है वो सक्सेसिव होता है। सक्सेसिव मतलब पहले सेल में हुआ तो दूसरे सेल में भी हो सकता है। इसलिए कभी देखना, जब ड्यूज बॉल से या फिर कॉर्केट बॉल से चोट लग जाए हाथ में, तो एक जगह पर कालापन आए और वो दूसरे जगह पर भी फैल जाता है। अंडरस्टूड माय पॉइंट? एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेन्स। आई वाज राइटिंग completely different. Okay, these are the secondary patterns. Hope you understood the difference between apoptosis and necrosis. Now let us move towards the etiology of cell injury. Means etiology basically means the uh, manifestation of the disease or the problematic state. Means how it is manifested. मतलब ये जो डिजीज है या ये जो सिम्टम्स है ये क्यों आ रहा है. So the etiology of cell injury is depending upon a certain phenomena, like it may be oxygen deprivation,
like hypoxia. See in this slide. You can see hypoxia basically means that the decreased level of oxygen in the blood. तो ये एक कारण है कि सेल इंजरी हमारे बॉडी में देखी जाती है, क्योंकि मान लो कि ऑक्सीजन ब्लड वेसल से किसी टिश्यू में नहीं आ रहा, ठीक है, तो उस टिश्यूज में जो सेल्स होंगे उनमें एटीपी कम हो जाएगा, क्योंकि एटीपी कैसे बनेगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से और एरोबिक रेस्पिरेशन से, जिसमें हमें फ्री ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से। तो अगर एटीपी कम हो जाए तो हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर तीन फेनोमेना होंगे। एक तो जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, जो मैंने पहले ही बताया, जो रेगुलेट करती है कि हमारे इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर में इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे मूव करेंगे, उसका बिहेवियर ऑल्टर्ड हो जाएगा। वैसे होम्योस्टेसिस में सोडियम और पोटेशियम के लेवल जो एक्सचेंज होना चाहिए वो होता है 3:2। मतलब अगर थ्री सोडियम सेल से निकले तो 2 पोटेशियम आए, क्योंकि मैं ये बाद में अगर क्लास लूँ और अगर कोई और एडुकेटर ले तो वो ये बताएंगे, क्योंकि हमारे सेल्स में हमेशा एक नेगेटिव पोटेंशियल मेंटेन करना चाहिए। तो अगर नेगेटिव पोटेंशियल मेंटेन करना है तो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में हमें ज़्यादा कैटायंस रखने होंगे और इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में हमें कम कैटायंस रखने होंगे। तो समझ में आ गया कि 3:2 एक्सचेंज क्यों होता है। तो अगर एटीपी हमारे सेल्स में काफ़ी नहीं है, तो जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, जो एटीपी को मेटाबोलाइज करके एक्टिवेट होंगे, उसका काम नहीं होगा। तो क्या होगा, जो ये पंप है उसका मैकेनिज्म ऑल्टर्ड हो जाएगा, तो सेल में ज्यादा से ज्यादा पानी घुस जाएगा। सी द इनफ्लक्स ऑफ H2O. I don't know that why it is given potassium here, because it would be sodium. So the influx of sodium and water would be followed accordingly. और जब सेल्स में ज्यादा वाटर होंगे तो सेल स्वेलिंग होगा। स्वेलिंग के दौरान क्या होगा, अगर सेल स्वेलिंग हो तो एक दूसरी चीज जो होगा वो होगा साइटोस्केलेटल डैमेज। साइटोस्केलेटल मतलब हमारे सेल्स में सभी को पता है कि एक मैकेनिकल स्टेबिलिटी रखने के लिए साइटोस्केलेटन्स होती है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, कुछ वेसिकल्स हो गए, वो हमारे सेल्स की जो शेप है वो शेप को मैकेनिकल स्टेबिलिटी देते हैं। तो इस साइकोस्केलेटल इंस्टेबिलिटी आ जाएगा हमारी सेल्स में। तो अगर साइटोस्केलेटल इंस्टेबिलिटी आ जाए तो हमारा सेल्स का प्रॉपर जो शेप है वो बिगड़ जाएगा, सेल स्वेलिंग हो जाएगा और सेल डेथ। और द सेकंड phenomenon could be that if our cell is suffering from deprived ATP, it can lead to anaerobic glycolysis. And in anaerobic glycolysis, we are seeing that we cannot generate pyruvate from the usage of oxygen. Instead, we are following anaerobic respiration, and anaerobic respiration, as you all know, always generates lactic acid, and lactic acid is responsible uh, for the tiredness of tissue। कि हमें मालूम है कि लैक्टिक एसिड जनरेट होता है हमारी जो मसल्स है, एक्सोस्केलेटल मसल्स में, कि हम फील करते हैं जब কিসি মাসেলস মে हमें টায়ার্ডনেস হয়, যেন পেশিটা ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে, তখন কি হয়, ওখানে ল্যাকটিক অ্যাসিডের পরিমাণ খুব বেড়ে যেতে থাকে, অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয়। হিয়ার ইউ ক্যান সি the acidic environment is being created, which causes the clumping of chromatin. Now you might ask that why the acidic environment is inducing the clumping of chromatin, because
In acidic environment, some enzymes is getting released, which are responsible for the clumping of chromatin. Okay. Now in the third step, we are seeing that, let me make you understand, the endoplasmic reticulum would be broken down. Think it is an endoplasmic reticulum. And as it is rough, there are some ribosomes on the surface. And these are breaking down, means endoplasmic reticulum is breaking down and the ribosomes are getting released. And as the ribosomes are getting released, it is not getting enough supplement to synthesize protein. So we are seeing less protein synthesis, which is meaning that the cell would die with deprivation of protein. Okay. Now the second thing responsible for cell injury is physical agent. It could be heat, excessive pressure, or it could be uh, heat, excessive pressure, any kind of accident, or uh, it either can be any kind of uh, injury from sharp objects. Okay, so these are the physical elements involved in the cell injury. And also there are chemical agents like acids, heavy alkali, some hard soaps, also some gases, ionizing radiations, X-rays. Okay, there are microbial agents too, like Clostridium tetani, etc. Now let me tell you that most of the etiology of cell injury follows genetic predisposition. Means genes are responsible for the manifestation of the diseases. Like as you can imagine in some metabolic disorders, like he is eating or he is not metabolizing that amount of food properly. So it is building up fat in his body. That is how you can cause the injury to the cells. That if certain amount of fat is created, the other cells would deprive of nutrition because the fat cells would require enough nutrition to run the fuel. Okay. Now let us tell you the alteration of the sodium potassium pump. I have nothing to tell you here. You are bitterly seeing it. This is this is sodium potassium ATPase pump. Here it is exchanging is 3:1 ratio, 3 sodium extracellularly and 2 potassium going inside the cell. And these are the some other channels like potassium chlorine channel, the aqueous pore, etc. etc. Okay. Now let us move towards the another kind of etiology of cell injury that I was talking about. This is what, that in case of hypoxia, in which our cells are suffering from deprivation of oxygen, mitochondria can get damaged. And after getting damaged, it cannot produce enough ATP
and it is producing reactive oxygen species. We are very reactive in nature, means it can induce certain biochemical reactions in our cells, which can further generate some सीरीज ऑफ मेटाबोलाइट्स, जो मेटाबोलाइट्स हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाए हाइपोक्सिया से तो नेक्रोसिस आ गया। और अगर ये इंजरी माइल्ड हो, कि हमारे केमो रिसेप्टर्स में पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल उतना नहीं बढ़ा, मतलब सरवाइव कर पाएंगे, तो क्या हो सकता है, तो ये एपोप्टिक प्रोटीन्स रिलीज करते हैं। इट कैन बी प्रो और एंटी बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेस। सो ये क्या रिलीज करेंगे, साइटोक्रोम सी। आई वॉज अर्लियरली टेलिंग अबाउट दिस इज साइटोक्रोम सी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडक्शन ऑफ एपोप्टोसिस। ये साइटोक्रोम सी प्रोटीन एपोप्टोसिस करवाता है। जब भी किसी सेल में साइटोक्रोम सी रिलीज हो तो वो सेल एपोप्टोसिस से गुजरेगा। ओके, and these are the same things in compilation, that hypoxia induced cell injury, reactive oxygen species induced cell injury. Reactive oxygen species could be hydroxyl reactive oxygen species, could be peroxide, superoxide, etc. And radiation induced mutations which can cause DNA damage. From radiation, you might all know that in Russia after Chernobyl and in Japan after Hiroshima Nagasaki, that mutations followed generations after generations in the DNA, which resulted in some alterations in their physiological patterns. Now, mutation induced alterations, etc. Yes, if cell stress is too much, means mutations are seen in the cells, then endoplasmic reticulum cannot generate actual proteins. It would generate misfolded proteins. And these misfolded proteins have minimum actions with respect to the proper proteins. So these misfolded proteins cannot induce any kind of response. And on the other hand, it can go through apoptosis. Okay, দাদা আগের স্লাইডটা দেখাবে তো। আগের স্লাইডে বলতে এইখানে যেখানে সেল ইনজুরির সমস্ত না, ফেনোমেনন। এটা আগে হাইপক্সিয়া যেটা শুরু হয়েছে। हाइपोक्सिया माइटोकॉन्ड्रिया और ओवरऑल আগেরটা, এইটা না এটা না, একটা এর পরেরটা this পরে। one হ্যাঁ এটা। this one. So if any cell is suffering from hypoxia, so the mitochondria would be responsible for some alterations in the cell. It would cause what? It could not be generating enough ATP, क्योंकि ATP बनाने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए, और अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो तो हमें एटीपी मतलब जितने अमाउंट में चाहे उतना अमाउंट मिलेगा। और अगर हाइपोक्सिया हो तो एटीपी कम अमाउंट में आ रहा है। ये जो एटीपी है ये कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो हमने पहले देखा कि एटीपी अगर कम हो, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो तो पीएच घट जाएगा। अगर पीएच घट जाएगा तो क्रोमैटिन क्लम्प हो जाएगा। अगर क्रोमैटिन क्लम्प हो जाए तो सेल का नेक्रोसिस हो जाएगा। ये था बेसिक मैकेनिज्म। ओके, और तीसरी बात जो मैंने उतना नहीं बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो परमेबिलिटी हो सकता है वो अगर चेंज हो जाए तो उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब
किसी भी ऑर्गेनेल का जिस भी इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल में जो एंजाइम रिलीज होंगे और सिग्नल जनरेट होंगे, अगर वो पोटेंशियल कम हो जाए तो एटीपी का डिप्लीशन चालू हो जाएगा और हम रिएक्शंस और कोई भी रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, বোঝা গেছে? And the second thing is regarding apoptosis, which is about the mild injury which cells can survive. বোঝা গেছে? হ্যাঁ দাদা। ঠিক আছে। Now we should be moving to so this was from the mitochondrial slide that the effects of depletion of OTP can result into tons of other things. You already know. Decreased glycogen can happen because in anaerobic respiration, if we are not getting enough ATP, we are using glycogen stores in our body. So the glycogen store is found in the liver and the skeletal muscles. So as we are using them, we are seeing the decreased glycogen stores in the body, and successively these are the things you already know, that increased sodium, decreased potassium, and sodium and calcium always follow the same pattern. Keep in mind the sodium and calcium follow the same pattern. And increased calcium, this is another important thing, कैल्शियम जो है वो काफी एंजाइम्स के एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर सेल्स में ज्यादा कैल्शियम हो जाए तो एंजाइम्स ज्यादा एक्टिवेट होंगे। Excessive activation of enzymes can lead to excessive biochemical reactions, excessive toxic metabolites, and excessive degradations of the cells. और अगर कैल्शियम एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी निकले और भी ज्यादा हो जाए तो सेल का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, see here it is, failure of calcium pump, we are seeing excessive amount of calcium intracellularly. See this, detachment of ribosomes can happen, including the depletion of ATPs. Okay, and after detaching the ribosomes cannot stay viable, वो काम नहीं कर पाता, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होता। ठीक है, और तीसरी ये चीज भी पता है कि मिसफोल्डिंग हो सकता है प्रोटीन्स का, जिससे हमें प्रोटीन्स ना मिले, और अगर प्रोटीन्स ना मिले तो प्रोटीन से एंजाइम नहीं बनेंगे, हार्मोन्स नहीं बनेंगे, और सेल का सिग्नलिंग ही बिगड़ जाएगा और सेल डेथ हो जाएगा। So we are discussing every single thing again and again because clarity is very much needed. And the next thing about cell injury is reactive oxygen species, the ROS, which were some hydroxyl or superoxides, and the enzymes acting against them are superoxide dismutase. Remember it, that the enzymes are superoxide dismutase, or in short form this superoxide dismutase, or we can see glutathione, glutathione, glutathione peroxidase, and these are the some enzymes which are responsible for the scavenging of the reactive oxygen species, because any group which are containing sulfhydryl, like glutathione also contains, so sulfhydryl sulfhydryl group containing drug sulfhydryl group containing uh, not drugs, compounds,
are responsible for the scavenging of reactive oxygen species because they can trap them, including ascorbic acid. As you know, vitamin C is very good antioxidant. Ascorbic acid. Also, vitamin E. Can anybody tell me what is the another name of vitamin E? Tocopherol. Tocopherol, or betterly known as alpha tocopherol. Okay. So, lipids, proteins, and DNAs are producing reactive oxygen species. Now, let me tell you how. Because let me tell you how. The lipids, after injury, the lipids are going through peroxidation. The lipids are going through peroxidation. Accordingly, the proteins are going through oxidations, and the DNA is going through damage. And all these three systems are producing reactive oxygen species. Okay, understood that how we are getting the reactive oxygen species after the peroxidation of lipid, after the oxidation of protein, and the damage to the DNA. And these oxygen species are very reactive. As it is very reactive, yes, here you can see, yes, here it is written also. It was my waste of time. Here it is written that reactive oxygen species are leading to this. Okay, so this is the another cause to the cell injury. From tissue damage, we are observing cell injury, and that is the case. And in the next part, we can see responsibility of the ionizing radiation, including X-ray, be it gamma ray, in the generation of cell injury. So, ionizing radiations cause what? They cause radiolysis of the water, which can generate, which can generate hydroxyl reactive oxygen species. It is also an ROS, including superoxide. Hydroxyl is a protein ROS, which can attack both the proliferating and non-proliferating cells and can cause the lipid peroxidation, DNA damage, oxidation of the proteins, etc. Okay, so you might have understood that from these slides we have been uh, talking about the different etiologies of cell injury, कि cell injury कैसे होता है. Or in the next step we will be discussing about the pathogenesis of cell injury, कि cell injuries में क्या होता है. So पहले मैं एक अभी बॉक्स में आपको दिखाऊंगा कि pathogenesis of cell injury is about what. Pathogenesis of cell injury is about what. So from the first step we can see in pathogenesis the primary thing involved is membrane damage. कि सेल इंजुरी कैसा होगा. एटियोलॉजी तो समझ गए कि ऐसे हो सकता है, और अब एटियोलॉजिकल रीजंस हमारे पास मौजूद है. तो अब हमें जानना होगा कि ये जो सेल इंजुरी है ये कैसे बढ़ेगा. तो पहले हो गया membrane damage. So membrane damage could be of lysosomes, mitochondria. Okay.
And the next thing is depletion of ATP synthesis. डिप्लीशन ऑफ एटीपी सिंथेसिस। ये आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या होता है। और उसके बाद हो सकता है कि उसके बाद मेम्ब्रेन डैमेज, डिप्लीशन ऑफ एटीपी एंड ये हो सकता है कि ऑल्टरेशन इन द जनरेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या है? जो हमारे सेल मेम्ब्रेन का एक प्राइमरी एलिमेंट है कि फॉस्फोलिपिड अगर जेनरेट ना हो तो हम ऑल्टरेशंस देख सकते हैं। उसके बाद हो सकता है साइटोस्केलेटन और एबनॉर्मलिटीज, कि हमारे साइटोस्केलेटन अच्छे से सेल को स्टेबल नहीं रख पा रहा। ठीक है, तो दीज आर द पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजुरी। नाउ लेट अस मूव टू some other slide. Pathogenesis, yes. Now you could be understanding that we are not taking the nuclear damage into account, कि न्यूक्लियर डैमेज जो है वो हम कभी नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि डीएनए डैमेज होगा, सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगा, लाइसोसोम डैमेज होगा, पर न्यूक्लियर डैमेज कैसे होगा ये हमने नहीं बोला। तो इसलिए देयर आर 3 स्टेप्स which the nuclear damage proceeds through. Number 1 is karyolysis, the second one is pycnosis, the third one is karyohexis, and all these 3 steps are the elements of nuclear damage. और अगर न्यूक्लियर डैमेज होते हैं तो वो सेल इंजरी इरिवर्सिबल हो सकती है माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज की तरह। कैरियोलाइसिस में क्या होता है, यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि क्रोमैटिन डिसॉल्व हो सकता है ड्यू टू, as we know that there are increased levels of calcium. So these calciums are responsible for the activation of DNAs or RNAs in the lysozyme. Excessive calcium, excessive activation of these enzymes. And if we look into pycnosis, pycnosis means that the DNA is condensing. And on the other hand, in the nuclear fragmentation, the pycnotic nuclear membrane ruptured. The nuclear membrane has ruptured and the nucleus has undergone fragmentation, means we are not getting any kind of chromatin, chromatin fiber, chromatin fiber, nucleolus, any kind of organelle which is residing inside of the nucleus. And this nuclear damage is leading to irreversible injury or necrosis and apoptosis. Okay. And this is a diagram I don't need to tell about, that whenever ischemia happens, ischemia means that we are seeing less amount of oxygen
along with oxygenated blood. Ischemia means the deprivation of oxygenated blood in the a certain group of cells. Like we have heard about cardiac ischemia. Cardiac ischemia definitely means that there is the less reach of the oxygenated blood in the cells of the cardia, cells of the heart. So that ischemia is resulting into decreased levels of oxygen, hence increased calcium in the cytosol, activation of different enzymes, protease, protein damage, phospholipase, phospholipid damage, nuclease, pignosis, karyolysis, karyohexis. You know everything about them. And calcium deposition, which can induce excessive activation of the enzymes, mitochondrial densities, means mitochondria is seeing the uh, release of certain proteins like cytochrome C. Okay, and these are the following things. Now, we have basically gone through every kind of cell injury. So now, if you have any kind of question, please ask regarding cell injury, stress, anything. Please ask. বুঝতে পেরেছি দাদা। अच्छा बाकीरा सेल इंजुरी के बारे में कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। कोई क्वेश्चन सेल इंजुरी के बारे में, या फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव कर सकता हूँ? नो क्वेश्चन फ्रॉम योर एंड? ओके, okay, so now I am moving to adaptation. Adaptation means the cell's response to the injury, means the cell is trying to recover the stress it has gone through. Think about it is a normal cell, normal epithelial cell having basement membrane, a nucleus, all this stuff, and it is responding towards some cellular stress. So now there are certain things that we are seeing. It can show atrophy, means decrease in the cell size, hypertrophy, which means increase in the size of the cells, or hyperplasia, means increased number of cells in the body. Also, we can see metaplasia, means the change of one type of cell to another. Think that any epithelial cell type like stratified epithelia has converted into squamous epithelia. Understood? This is an example of metaplasia. But in case of dysplasia, we are seeing abnormal cell growth. And abnormal cell growth
is about neoplasm, benign tumors. So dysplasia can lead to tumors. Okay. So these are the kinds of adaptation that our cell tries to put on. Okay. So I am zooming in. Understand this. I have zoomed everything, that how our cell respond to stress. See this very carefully. Try to understand from these figures that how is the cell responding, that it is increasing the cell numbers, it is increasing the cell size, or it is changing the cell kind from one to another. Okay. Now let us brief about these adaptations. So what we had seen earlier, atrophy you all are familiar about, because in Facebook you might have recently encountered some events like uh, Duchenne muscular atrophy, like this. Duchenne, sorry, Duchenne muscular atrophy. Okay, DMA. So this is the primary example of atrophy. That what happens in atrophy? In atrophy, we can see that the cell size is decreased. And in Duchenne muscular atrophy, the cells of the muscles, which are the sarcocytes decrease in size. Means we cannot see mature muscle in body. Like the child is growing, मतलब उम्र बढ़ रही है पर मसल्स मैच्योर नहीं हो रहे हैं, मसल्स बढ़ नहीं रहे हैं. Some examples are some examples of atrophy are polio, Alzheimer. Why Alzheimer? Because in Alzheimer, the brain cells shrink. Okay, Alzheimer's. And the second thing we would be talking about is hypertrophy or increase in cell size. Okay, hypertrophy or increase in cell size. In hypertrophy, what happens? The cells are residing in a normal pattern. सेल्स जैसे थे वैसे हैं, पर वो साइज में बढ़ेंगे. जैसे वी कैन जैसे हम देखते हैं प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो यूटेरस का सेल है, यूटेरस में सेल है वो बढ़ता है, क्योंकि हम वुम्ब देखते हैं. यूटेरस में ही यूटेरस फीमेल यूटेरस बड़ा होके बेबी को एकोमोडेट करता है. ये एक तरफ से हाइपरट्रॉफी है. दूसरी तरफ हम देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एट्रोफी, LV left ventricular hypertrophy, LVH, in which the left cells of the left ventricle increase. That is how the left ventricle cannot pump blood throughout the body properly. Okay, these were the examples. These were the prominent examples. And now let us give you a brief idea around hyperplasia. That in hyperplasia happens what? In hyperplasia,
our cells increase in number. Our cells increase in number. And let me give you some examples of hyperplasia that in endometrial, in endometria, hyperplasia is seen, like endometrium hyperplasia, like in menstrual cycle. We can see when the menstrual cycle has just started, in 4 to 7 days we can see the release of blood and the cell debris. We and uh, why does it happen? Because the endometria has gone through hyperplasia. The endometria has increased its number of cells, which in the menstrual phase it is releasing its excess load or excess cell lining. Okay, and in liver, the hyperplasia, the liver cells, the liver cells. Our liver cells are very proliferative and it goes through hyperplasia every time. Like you have already known that if we transplant liver, it can accommodate the um, recipient's body very quickly and proliferate very quickly. So that is how we can uh, take liver cells as a better example of hyperplasia. Now let us talk about metaplasia. That in metaplasia happens what? Let us give you some examples. In metaplasia, as I had earlier told about that, the cell types change. Like uh, the persons who smoke, the persons who smoke, the person who smokes, his cells of trachea and bronchi change from ciliated columnar epithelial cells to stratified squamous epithelial cells. See, in a smoker, in a smoker, the ciliated columnar epithelial cells, which are responsible for the entrapment of uh, foreign elements, the entrapment of debris inhaled from the environment. But in smoker, they get converted into stratified squamous epithelial cells. That is why it is always told that smokers are very prone to irritation of the bronchi because they have lost their cilia. As cilia block the particles from the outside air, that is why after destruction that smoker has no cilia. So he follows irritation, bronchial cough, etc. And as an example of dysplasia, dysplasia means abnormal kind of cell, means it is not converting into or generating into some regular kind epithelial cell, nervous cells. No, it is converting into abnormal type of cell, irregular shape, irregular genetic makeup, these things. So in cervix we do see such kinds of dysplasia because it is a form of malignancy. Okay, because it is converting into abnormal kinds of cell. Hope you all have understood these things. If any questions around the adaptation of cells, please ask. And let us tell you an example that
The uterus during pregnancy observes both hypertrophy and hyperplasia, means the cells do increase in size along with in numbers. Means to accommodate the fetus, it increases in numbers along with it increases in size. And that uterus is named gravid uterus. GRAVID. Okay. Now, any questions around adaptation? If you do have, please ask. We have paucity of time. So nobody has any question, right? Okay. No, sir. Okay. So the next step towards cell injury is, okay, let me point it out, is calcification. Calcification means the deposition of calcium ions. As you can see, calcium can deposit in kidney, in the biliary ducts, the biliary ducts, and also the yes, kidney and the blood vessels. Okay, so this is a normal artery facing any do not facing any problem. But if deposition of calcium happens, it is forming a kind of plaque and a disposition of hard calcium mineral, which is known as calcification. And calcification is a result of inflammation on the response of certain kinds of cells. Okay, that is why it is included in this chapter, that calcification happens after some kinds of alterations. There is nothing to discuss more about it. Just see that why does calcification happen and how does it happen. Okay, now these are the kinds of adaptations. See, our in homeostasis or normal state, our body pH is between, or the pH in our blood is between 7.3 to 7.35 to 7.45. It is a natural pH. But if it is altered, like in our blood, oxygen levels are less and carbon dioxide levels are very high, our bloods have become deoxygenated. So we can observe acidosis, high PaC2. PaC2 means the partial pressure of carbon dioxide in the blood vessels, and low bicarbonate ions. Bicarbonate ion is responsible for maintaining the alkaline nature in the blood. So homeostasis is hampering. On the other hand, if the oxygen levels have become heavily increased and the blood vessels carbon dioxide levels have become less, also accordingly the bicarbonate levels have become high too, we can observe alkalosis, high alkalinity in our blood. Then we have a system to follow this homeostasis, which is carbonic acid buffer. Carbonic acid buffer maintains through the interchange of bicarbonate ions. The interchange of bicarbonate ions. Okay.
Carbonic acid buffer or bicarbonate ion is responsible for the maintenance of the pH. But if it is hampered, and this is the mmHg value, okay, you will need it later. So if it is hampered, they are ready to maintain it. Means if the blood vessels are facing less bicarbonate ions, it would enrich it. If it is facing more bicarbonate ions, it would decrease it. Okay, and similarly with carbon dioxides. Since this one, follow the chart. And if the pH in our blood is imbalanced, which can follow systemic acidosis or metabolic acidosis, and apparently it can further result into metabolic alkalosis. Means the pH less than 7.35 is termed as metabolic acidosis, and the pH of blood more than 7.45 is termed as metabolic alkalosis. Okay. Now this is the final slide, and these are the reference ranges of some electrolytes in our body, and electrolytes are very important in our regularly function. You would later know that sodium and potassium are known for the conduction of stimuli, of nerve stimuli. So their imbalance cannot be uh, taken for granted. And calcium is very important. 99% of calcium is responsible to form the bones and teeth, and only 1% is available in our blood. Calcium is responsible for formation of bone and teeth, along with chlorine. Chlorine is responsible for some neural changes, cell potential regulations. Calcium is also responsible for activation of enzymes. Calcium is also responsible for activation of enzymes. Okay. So these are some of the examples. And magnesium is also responsible for regular bodily functions, because magnesium is also responsible to activate some enzymes. You already know. Serum creatinine also to maintain the basic excretion possible. Let's go through the levels of this. Sodium 135 to 145 mole equivalent per liter. Potassium 3.5 to 5. Calcium 8.5 to 10. Fluorine 96 to 109. Phosphorus 3 to 4. Phosphorus is also responsible for the formation of bone and teeth. Bone and teeth. And magnesium, the range is 1.4 to 2. And this. These are the major elements of cell injury and adaptation. Okay. Yes, sir. So our today's chapter is completed. Now, if anybody has any question, ask, and if you don't have, leave by 2 to 3 minutes. Okay. If you do have any question, ask or leave by 2 minutes.